So I have been very successful in making 7 successful videos on each single day. It was not easy at all. यूनिवर्सिटी के अंदर आज मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स आए हैं प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ लेकर। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं, लेकिन आपने अप्लाई करना होगा। एक यूनिवर्सिटी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे और अगर आपको पहले प्लेसमेंट मिलेगी। अगर प्लेसमेंट मिलेगी तो फिर आपको एडमिशन मिलेगी। लेकिन पहले हम इधर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्पटन में आ चुके हैं, हमें तो इधर प्लेसमेंट ऑलरेडी चाहिए। हमने एडमिशन ऑलरेडी ली है इस यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी तो स्विच नहीं कर सकते। अभी प्रोग्राम लीडर के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट थी इसी प्लेसमेंट के हवाले से कि प्लेसमेंट आपको मिली है, नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, वो हो गई है। उसके बाद अभी मेरे पास 2 आवर्स है नेक्स्ट क्लास तक के, तो उसके दौरान अभी हमने ऑर्डर किया है। We have ordered लैम्प डोनर। हाँ, अली भाई पहली दफ़ा खाएंगे भाई। लैम्प डोनर हमारा ऑर्डर आ गया है। अभी वो टैक्सी वाला जो है भाई साहब, वो इधर मौसम की पार्किंग में पार्क करेगा। बहुत खुशी है, कुछ नहीं खाया था सुबह से। जिंदगी का मकसद बताइए। ये जिंदगी का मकसद तो अभी 2 ही है। अच्छा। एक तो प्रेजेंटेशन बनानी है कल के लिए, अच्छा, कल के लिए, और बाकी असाइनमेंट है। अच्छा। और आप माल भाई? मेन चीज़ जो है हमारी मीटिंग का आज है ना पर्पस, हाँ, वो हमारा जो FPL कंपटीशन है उसकी मीटिंग है। हाँ, उसका हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे और देखने लगे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को किस तरह कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें कल तक इसकी फाइनल पावर पॉइंट जमा करनी है हाँ, और उसके बाद फिर हमें प्रेजेंटेशन देनी है फ्राइडे को। ठीक है। तो दुआ करना बल्कि अच्छा हो, बल्कि हमें कोई आइडिया आए, कोई देखे हम किस तरह इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। वेल डन, वेरी वेल डन। और रन भाई, आज यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है? आज एम्प्लॉयमेंट इवेंट चल रहा है जी। किस चीज़ का, उसमें क्या हो रहा है? आज लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स आए हुए हैं, कुछ वॉलंटियरिंग के लिए आए हुए हैं। वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, और बन रही है कि नहीं। अच्छा भाई, अभी शुरू इस तरह करते हैं कि परसों इन बच्चों लोगों की है सबमिशन नहीं, बच्चे लोग मतलब महान लोग, तो महान लोग तो इन्होंने परसों करनी है सबमिट, और ये होते हैं लेजेंड। आप इनकी लेजेंडरी जो है ना, उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परसों सबमिशन है कंपटीशन है एक्चुअल, और अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी आज की रात में ये दिन था करने वाले हैं। दिन था। स्टार्ट की है। देखिए अभी हमने 7 दिन पूरे हुए व्लॉगिंग के, और इसको अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो बेसिकली बहुत फजूल बना रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि 7 दिन मुसलसल बनते रहे, कंसिस्टेंसी। अभी ये चाय बना रहे हैं, फिर अपने रूम जाएंगे। रूम जाके हमारे साथ इस वक्त कैमरे के पीछे मौजूद हैं साइम भाई कानपुर। इनसे पहले व्लॉग में आप लोग मिले होंगे, इनसे हम 2-4 मजीद बातें करेंगे। अभी चाय का टाइम है, चाय के साथ में ये लाए हैं सामान। तो अभी कमरे चल के बाकी बातें फिर उधर करते हैं इंशाल्लाह। इसको बंद कीजिए। So I have been very successful in making 7 successful videos on each single day. It was not easy at all. It was really difficult. Whenever I woke up in the morning, I had only one thing in my mind: that what I'm gonna shoot today, how am I gonna make it. And whenever in the end of the day I had a final product in my hand, ready to be uploaded on the very next day, I cannot explain the feeling that I had. So I'm gonna talk a little extra in this video, and let's start today's video. So in today's video I'm gonna talk about books and आपकी जो आदत है बुक्स पढ़ने की। मैं जब बचपन में था तो मुझे बुक्स की कलेक्शन की बहुत ज़्यादा शौक थी। मैं मेरे पास एक लिस्ट होती थी, उस लिस्ट में मैं टिक किया करता था जो बुक्स मुझे मिल जाती थी, और जो नहीं मिलती थी उसकी फिर मैं एक अलग लिस्ट रखता था कि ये बुक्स मुझे लेनी है, मुझे चाहिए। ज़्यादा महंगी बुक्स मैं नहीं रखता था, लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो करती थी बुक्स की, और उनको मैं रीड किया करता था। तो बुक रीडिंग ये मेरी एक बेहतरीन हैबिट हुआ करती थी, और जो कि बाद में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वन ऑफ माई इंडियन फ्रेंड he had just bought a book called Rich Dad and Poor Dad, and I'm gonna give you a little review that what this book is all about. He bought this book from the Amazon, and it's I think less than 20 pounds. He had a voucher given by the university of 14 pounds or 15 pounds, and anyway this is less than 20 pounds, so you guys should definitely check it out and read it out. It's really worth. And somehow I managed to borrow the book from a friend. He had actually 2 books.
and I'm gonna read it in next 10 days, and then I will make another video in which I will give the full review of the book. Until then I would have highlighted important points and important topics, but main बात इस book में क्या है, there is an author, वो स्कूल में पढ़ता था, जो author है इसका, वो उसका जो फादर था वो पुअर था, और उसका जो स्कूल फ्रेंड था उसका जो फादर था वो रिच था, वेरी रिच था. तो उसने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो नोट की कि व्हाट इज़ द पैटर्न एंड माइंडसेट ऑफ पुअर पीपल एंड व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ रिच पीपल. तो उसने कंक्लूजन में ये कंक्लूजन देने की कोशिश की कि इट्स नॉट the sources of income and amount of money you already have or you are being inherited by your parent. It's the mindset and thinking that you inherit to your offsprings, और ये mindset है आपका जो आपको अमीर या गरीब बनाता है. और the focus and the light was shed on the importance of investment, and then again he concluded that you do not need to have a lot of money to become an investor. It's all about your habits, your spending habits, your saving habits, and then your investing habits. आप सेविंग को हफ्ते बाद पार्टी में उड़ाते हैं, या आप जो है उस सेविंग को रखते रहते हैं और हल्का हल्का शेयर्स में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. So it's really worth it, and I have targeted. I'm gonna read this full book in next 10 days. You might have heard of Warren Buffett. He reads more than 300 pages. I think he reads, way more than 300, but to be on the safe side, let's say he reads 300 pages. At this age, being 86 years old, if he can read 300 pages, why can't I? I can do as well, and I must do. In 10 days, next 10 days, I'm gonna read it out, और ये मैं habit adopt करूँगा book reading, because it improves a lot of your skills, It gives you personal skills, communication skills, and you learn a lot. It's very important for your personal development, your career development, and skills development. You get a lot of skills from this book. Vlogging में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी आज भी किसी नए स्टेट की एक वीडियो अपलोड हुई है, वो दोबारा देखेंगे तो झक्कास हो जाएंगे. And my friends, अभी जिनसे आप मिले कुछ देर पहले, they have participated in a competition held by University of Northampton, being organized by a employer Blue Skies. It's a huge company, and they import organic products from different countries, and the idea is that the students will propose different projects and different business ideas, and the one which is the best one would be selected as the winner team, and they would be given prizes of laptops. And there were a lot of teams, and I'm also part of one team. There were total 3 students allowed maximum in one team, but I was the 4th one in my team, and then the university told me that they will give me a certificate of participation, that I have participated in discussion, and I volunteered for it. Because I had another activity on the competition day, so I volunteered that I would be inactive partner, inactive team member. I would participate in the discussion in everything, but I would not get prize if my team wins, but I would get a certificate of participation that would be worth, and that would add a significant value to my CV. So I might ask my friends if they win at the end of the day to share batteries and hard disks of the laptops. I think they will get MacBook. I'm not sure. The last thing I'm gonna say in this vlog, I have loved making vlogs in these 7 days, and it was really great. It was difficult to hold the camera and just turn it on in public whenever everyone is seeing you, and it might seem a little awkward, but you need to overcome these things, because you just need to remember no one cares. Then I decided to observe others. If someone is doing something that is a little awkward, I didn't care. So I just thought, if I'm holding a camera like this in front of public, they do not care. They don't really care about these things. So why should I be shy? I should not be shy. So it made me inspired, and it made me make more and more vlogs. So successfully I have made 7 vlogs. It's thumbs up. And if you haven't subscribed already, do subscribe, because this channel is gonna be very huge in next couple of months maybe. I have seen videos of Sharik Raza, who's from Australia, Sydney, and I have seen him growing from zero. He has gathered tremendous amount of success and respect, and it's a huge achievement. He has 17,000 subscribers, and at this point I have less than 150, 146 or 147, but still it means a lot to me. I just started. It's my 7th or 8th day of continuous vlogs. I had made a lot of other shit content already 2 years ago, but this is my professional season that I'm gonna make. And in this vlog I'm gonna mention that there might be delays in next videos. I might not be able to keep up vlogging
every single day just because of some personal work and some personal things. But when I'm gonna come back on the YouTube, it will be very soon. I'm not gonna quit it, but the next video would not be tomorrow. Maybe there might come. It all depends on my activities, but just in case, I'm gonna let you guys know that next video might take more days, but the content would be very strong. For that I'm very much sure. Thank you so much for all of you watching, you who have watched, and for subscribing and for liking. And at the end, and in the end of the vlog, lastly, do develop reading habit. It's really worth, and you realize the importance of reading when you have studied a lot of books. I mean, after reading for the first book, you will see changes in your thinking style, especially this book, Rich Dad and Poor Dad. I'm gonna see you guys tomorrow or maybe later on. Thank you so much for watching. Have a good day. When nights were cold, she'd say, the world's not perfect, but it's not that bad if we got each other, and that's all we have. I will be your mother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you when the world's not perfect, when the world's